Dear friends, it's time now that we learn a new story. And in this story, which is from English literature, we are going to learn the picture of life as it exists. The story, The Lost Spring. Spring means Basant. The lost spring means खोया हुआ बसंत. And Basant is metamorphically used for Bachpan. Like the way we have 6 seasons. One of the seasons is Basant, which is very pleasant season. Bachpan is also very pleasant. In fact, the most pleasant phase of life, Bachpan, childhood. So this story is Lost Spring, खोया हुआ बचपन. Bachpan खो गया. You can say this also. Bachpan खोया, बचपन खो गया. The writer of the story is Mrs. Anis Jung. Mrs. Anis Jung, a lady writer, a Muslim writer, born in Rourkela, Odisha. Rourkela is famous for its steel plant, like the way Bhilai steel plant is there. Similarly, Rourkela also has a very big steel plant. She is born there in 1964. At present, she is about 58, 59 year old. And she has been writing continuously ever since the age of 22, 23. She is famous for her write-ups as a columnist, as a journalist, as a story writer, and she writes for famous magazines in India and abroad, well-known newspapers in India and abroad. She began her career with the Times of India, a very famous paper, which has its supplement Youth Times. Not a supplement, but another paper which publishes that group. And that group publishes Times of India. In that she worked, and she worked as editor also for that. And then continued to grow. Now, this writer, Mrs. Anis Jung, is a Muslim and is famous for writing many books, the most famous of which is Unveiling India. Unveiling India. भारत को बेपर्दा करना. You can translate that title into something like this. Unveiling India. To veil means पर्दा. Unveil means पर्दा उठाना. So Unveiling India, that means this book is about India. And especially in this book, she writes about women condition, and that too with a special reference to Muslim women. She has told untold narrations in this book, Unveiling India, written sometime in 2005. And that book is famous for a very proper, systematic narration of condition of Muslim women in India. That apart from being journalist, columnist, writer of eminence, writer of acclaim, being writer of most famous book Unveiling India, she has also written a book on children. The Lost Spring is one of her book of stories collection. The Lost Spring is a part of that book which is titled
The Lost Spring, the stories of a stolen childhood. See the title of the book, The Stories of a Stolen Childhood. ऐसी कहानियाँ जिसमें बच्चों का बचपन चुरा लिया है लोगों ने, बचपना चुरा लिया है, बच्चों का बचपना चुरा लिया गया है, अर्थात बच्चों के बचपन को छीन लिया गया है। किन कारणों से ये उसमें लिखा है, उस कहानी में द स्टोरीज कंटेन द डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ चिल्ड्रन लूज देयर चाइल्डहुड, नॉट देयर लाइफ, देयर चाइल्डहुड। बचपना अपना कैसे खो देते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, द स्टोरी विच इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ is one of those stories. The story is about some 3-4 children. Each of them have different background, but there is one thing common, that they all come from extremely poor families. That they all come from extremely poor families. But otherwise, they have a different kind of background. उनकी जो पृष्ठभूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो थोड़ी अलग अलग है. But the kind of life they all lead is that of dire poverty. And why they are poor, that is also narrated in the story by the writer in her own way. The writer's interaction with these children forms the dialogue of this story, and toward the end, through this story, The Lost Spring, the writer gives a message, a very powerful message about the divided India, the divided society. Society which has powerful people on the one side, which has absolutely powerless people on the other side, and how they are coalescing. And at the same time, the message goes to the people coming from powerless family that you must have dream. The people who are from poor family, for them a message by the writer through this story, must have a dream. Dream big, then you can achieve success in life. The Lost Spring is a very famous story, as I said, by Mrs. Anis Jung. This story is basically about a child who is a rag picker. Rag picker means कचरा उठाने वाला. आप देखते हैं सड़कों में, कॉलोनी में जाके, अन्य जगहों में कई बच्चे प्लास्टिक डब्बे, छोटे छोटे कैन, बोतलें आदि इकट्ठा करते हैं, बोरे में रखते हैं, ले जाते हैं और उसको किसी जगह ले जाकर बेचते हैं और उसकी थोड़ी बहुत जो कमाई हो जाती है उससे अपनी जीविका चलाते हैं. Such people are called rag picker. Now rag picker boy is seen by the writer. You have to remember that this story is written by Anis Jung and written in a way as if she has experienced this. उन्होंने मानो अपने स्वयं का अनुभव इसमें लिखा है, यानी she is the writer and she is also the narrator. Right? The law. कहानी का शीर्षक अब आप देखिए. The Lost Spring. Lost शब्द जो है वो lose, lost, lost. To lose माने खोना, और यहाँ lose की स्पेलिंग देखिए LOSE. To lose यानी खोना. खोना है, उसका अर्थ खोया. Lost यानी खोया. सेकेंड फॉर्म जो है वो भूतकाल होता है अंग्रेजी में, आपको मालूम है. पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में खोया. लॉस्ट स्प्रिंग, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट का लॉस्ट लिया हुआ खोया, और स्प्रिंग मतलब होता है बसंत.
वसंत ऋतु। वसंत ऋतु क्या है? एक ऋतु तो है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। ये हमारे भारतीय संस्कृति में ये 6 मौसम हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत, वसंत। यानी वसंत जो है वो गर्मी के पहले का मौसम है। गर्मी प्रारंभ होने के पहले के मौसम को वसंत कहते हैं। बसंत का अर्थ भावनात्मक अर्थ भी है, भावात्मक अर्थ भी है। बसंत की बयार, आपने सुना होगा ये शब्द। वसंत ऋतु जो है वो एक बहुत ही ऐसी ऋतु मानी जाती है, ऐसा मौसम माना जाता है जिसमें खुशनुमा माहौल रहता है। ना बहुत ठंड, ना बहुत गर्मी और ना वर्षा से होने वाला व्यवधान। वसंत ऋतु बहुत आनंदमय समय, खुशी का समय। तो लॉस्ट स्प्रिंग का क्या अर्थ हो गया? बसंत खो गया। क्या अर्थ हुआ? बसंत खो गया। अब खो गया, और वह भी वसंत। क्या मौसम खो गया? नहीं। इट इज नॉट द सीजन, weather season of a year that is lost. No, it is the childhood that is lost. वसंत को लेकर यहाँ पर लेखिका ने बचपन से उसकी एक तुलना की है। वसंत एक ऐसा मौसम माना है, she has considered वसंत as a spring, as a season wherein it can be equated with the childhood stage of life. Childhood stage of life. बचपना, बचपन का काल, उसे वो स्प्रिंग के रूप में रखती हैं। बचपन के काल को वो स्प्रिंग के रूप में रखती हैं। एंड बाय इक्वेटिंग चाइल्डहुड विथ स्प्रिंग सीजन, she says the spring is lost means the childhood is lost. So the meaning of the title is the loss of childhood is mentioned in this story. The loss of childhood, and childhood means bachpan. So this is the brief about the story. Now let's move to the story para by para, and while doing so we will try to understand not only the lines but words and also the inherent meaning in the story. उस पैराग्राफ के अंदर जो अर्थ समाहित है, उस पैराग्राफ के अंदर से जो मैसेज राइटर देना चाहता है, उसको भी हम पैरा बाय पैरा पढ़ेंगे। राइटर इंटेंड्स टू गिव सम मैसेज इन ईच एंड एवरी पैराग्राफ टू द रीडर. So we will also try to understand the inherent meaning in each of these paragraphs as we proceed one by one. It's a beautiful story and about the childhood, a stage through which you have just passed by. Now that you are in 11th, 12th, it's no more bachpan for you. It's no more childhood for you. Now you are on the threshold of becoming an adult. Youth, teen. So the teenager के पहले की जो teenager के पहले का जो काल होता है वो बचपना है, और बल्कि 13-14 टीनेजर में आप 13 ईयर 14 ईयर बच्चे को भी ले सकते हैं, जो उसका काल को हम बचपन कह सकते हैं.
So here we go with the story in English, then its translation in Hindi, then few words from there in English, meaning thereof, and then inherent meaning. Side by side we'll move parallel in this. Okay? The story starts. Sometimes I find a rupee in the garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning. कभी कभी, sometimes, कभी कभी I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज माने कचरा, गार्बेज यानी कचरे का भंडार, इस कचरे के भंडार में कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है. Why do you do this? Ask the writer, who is the narrator himself. राइटर जो हैं वह स्वयं अपने अनुभव को नरेट कर रही हैं, मानो अपने अनुभव को बता रही हैं. सो आई मीन्स व्हाट? द राइटर, मिसेस अनीस जंग. Why do you do this? Mrs. Anis Jung, the writer, asks, as if. I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Neighborhood यानी आसपास, अपने आसपास जो कचरे के भंडार हैं, गार्बेज, कचरे का भंडार, उसमें एक लड़के को मैं देखती हूं जो स्क्राउंज कर रहा है, जो खोज रहा है कचरे से कुछ चीज. दैट बॉय इज सर्चिंग फॉर समथिंग. स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग फॉर समथिंग. एम आई क्लियर? स्क्राउंज मीन्स टू सर्च, एंड सर्चिंग बाय रिमूविंग थिंग्स. सर्चिंग नॉट बाय torch, searching by shuffling the waste. ऊपर नीचे करके जो कचरे को देख रहे हैं. I am trying to do that. I mean, that boy is trying to do that. So, I encounter Sahib every morning. मैं रोज सुबह उसे देखती हूँ. Encounter मतलब सामना होना. To encounter मतलब सामना होना. मेरा सामना एक बच्चे से रोज सुबह होता है जिसका नाम साहिब है, और उससे मैं पूछती हूँ, वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. जब उनका ये सवाल होता है तो साहिब बताता है कि मैंने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया. I left my home long ago. बहुत पहले मैंने. I left my home long ago. Set amidst the green field of Dhaka. ढाका के खेत के मैदानों में. His home is not a distant memory. While she asks the boy, Sahib, why do you do this? The conversation goes on. बातचीत चलती है. And in the course of the conversation, बातचीत के दौरान, Sahib tells the narrator, the writer, that I come from a place near Dhaka. Dhaka is in Bangladesh. In fact, Dhaka is the capital of Bangladesh. So I stay near Dhaka. I was from Dhaka. Lush green land, हरे भरे खेत थे. और मैं उसे भूला नहीं. ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. His home is not a distant memory. Distant मतलब बहुत पुरानी. मेमोरी आपको मालूम है, मेमोरी माने याददाश्त. कोई बहुत पुरानी बात नहीं है. जब हम लोग वहाँ रहते थे, there were many storms that swept away their fields and homes. There were many storms that swept away.
टू स्वीप अवे मीन्स बहा देना। स्वीपर आपने सुना है, स्वीपर का काम क्या है? स्वीप करना, पोंछना, साफ करना, उससे बना स्वीपर। टू स्वीप, स्वीप अवे यानी बहा देना। टू स्वीप यानी पोंछना और स्वीप अवे माने बहा देना। बाढ़ ने उसे बहा दिया। तो यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म यानी तूफान, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। लगातार बहुत सारे तूफान आए, आंधियां आई, परिणाम स्वरूप हमारे घर, हमारे खेत बह गए। ऐसा मेरी माँ ने बताया है। ये कौन कह रहा है? साहेब इज टेलिंग द नरेटर that my mother tells me that my house was swept away because of repeated storms, and that's why we left that place, and that is why, और इसलिए, that is why मतलब इसलिए हमने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि बार बार तूफान आ रहा था, घर उड़ जाते थे, खेत बर्बाद हो जाते थे। So we left that place, looking for gold in the big city where he now lives. Looking for the gold in the big city where he now lives. सोने की खोज में फिर हमने वो घर छोड़ दिया, बड़े शहर में आ गए। किस लिए आए बड़े शहर में? गोल्ड के लिए। और गोल्ड का अर्थ सोना नहीं है यहाँ पर, वो भी एक भावात्मक रूप से बताया गया है। गोल्ड मीन्स हियर जीवन यापन के लिए, समथिंग टू लिव हैप्पीली, फॉर रिचेस, अमीर बनने के लिए, जीवन यापन अच्छा करने के लिए। So we came for the gold. It means we did not come for gold as such, but we came for better living, for happiness, for better times. And where did we come? To the big city. What is that big city? We will learn later. But right now he says we moved to the new place because of repeated storms. And what is the name of the child? Sahib. I have nothing else to do, he mutters looking away. मेरे पास और कोई काम नहीं है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। I am doing this work. Why did he say that? Because the writer asked the very first question, why do you do this? तुम ये क्यों करते हो? कचरा बीनने का काम क्यों करते हो? कचरा बीनने का काम क्यों करते हो? उसका उत्तर ये दे रहा है, he is giving an answer, I do this because I have nothing else to do, no other work to do. And he mutters, धीरे धीरे। मटर करना मतलब बिना पूरा मुंह खोले धीरे धीरे सब बोलना, बड़बड़ाना, एक तरीके का बड़बड़ाना। He mutters, looking away. आंख से आंख मिला के राइटर को नहीं देख पा रहा, शायद थोड़ा शर्मिंदा होगा, शायद थोड़ा हीन भावना से ग्रसित होगा। So he is unable to meet eye to eye with the writer. And looking away, he says, well, I do this because I have no other work to do. Go to school, I say glibly. मैंने थोड़ा ग्लिप के साथ कहा, तो स्कूल जाओ, कोई काम नहीं है तो स्कूल जाओ। Then next line you see, go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. स्कूल जाओ, और जैसे ही मैंने कह तो दिया, कहा और कह दिया, कहने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं कितना झूठा वादा कर रही हूँ, कितना गलत सुझाव दे रही हूँ। ऐसा सुझाव जो हॉलो है, हॉलो मतलब जिसमें कोई दम नहीं है। I suddenly realized that I have given a very wrong advice to this boy by telling him, so go to school.
Is it so easy to go to school? So I just said, and I realized that it was a hollow advice. मैंने महसूस किया. To realize मतलब मैंने महसूस करना. I realized my mistake. You must realize that you are not working hard. You must realize the importance of examination. तुम्हें महसूस करना चाहिए परीक्षा की महत्ता. To realize. So I realized how hollow is this advice. कि ये जो सुझाव है ये कितना hollow है, थोथा है. Please note the spelling of the word advice. A-D-V-I-C-E. There is another word, A-D-V-I-S-E. That also means advice. So what is the difference between the two? First word, A-D-V-I-C-E, advice, is noun. मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, तो क्रिया क्या है इसमें? देना. और सुझाव क्या है? संज्ञा. सुझाव क्या है? संज्ञा. Noun. The word advice, A-D-V-I-C-E, is a noun. I am giving you advice. Next word, A-D-V-I-S-E, is a verb. You are advising me. There, the spelling is A-D-V-I-S-E. Remember, A-D-V-I-S-E, advise, is a verb. सुझाव देना. और केवल सुझाव मतलब A-D-V-I-C-E. So note this difference. So I have nothing to do. He mutters, looking away somewhere, and I immediately, the narrator says, I immediately say, so go to school. Realizing that this was a hollow advice. There is no school in my neighborhood. The boy immediately tells back कि मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. जब वो बनाएंगे मैं जाऊंगा. When they build one, I will go. अभी तो कोई भी स्कूल नहीं है. और इसलिए ये बात, ये हॉलो एडवाइस, और ये एडवाइस और हॉलो लगी क्योंकि आसपास स्कूल नहीं है. When the boy said, what was the name of the boy? Sahib. When Sahib said, yes, when the school will be built, I will go. So this lady, this writer, narrator says, if I build a school, if I start a school, will you come? She is asking that boy, Sahib, if I start a school, will you come? I ask half joking. Half joking. हाफ जोकिंग मतलब जोक नहीं था, मजाक नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा मजाक था. I ask half joking, if I start a school, will you come? I ask half joking, यदि मैं स्कूल शुरू करूंगी तो आओगे? What was his reply? Yes, I will. Smilingly, मुस्कुराते हुए. And how smilingly? Smilingly, smiling broadly. He said smiling broadly. Broad मतलब होता है चौड़ा, लेकिन broad smile मतलब बहुत बड़ी मुस्कुराहट. देखिए, broad smile मतलब बहुत बड़ी मुस्कुराहट, मुंह खोल के मुस्कुराया. He gave a broad smile. So with that broad smile, with big smile, he says, yes, I will come. Yes, madam, I will come. A few days later, I see him running up to me. एक दिन अचानक सुबह, a few days later, यहाँ later की स्पेलिंग देखिए. Later, L-A-T-E-R. Later मतलब बाद में. Later बाद में. और latter में अंतर है. L-A-T-T-E-R. लैटर. लेटर और लैटर में अंतर है. लैटर मतलब बाद वाला. यू कम लैटर देन मी. तुम मेरे बाद आते हो. लैटर मतलब क्रम में बाद में होना, सीक्वेंस में बाद में होना.
और लेटर का संबंध टाइम से है, समय से है। लेटर का संबंध किससे है? समय से है। लेट, लेटर, लास्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट, और यहां पर लैटर, लास्ट। यू आर लास्ट, ही इज लैटर। सो लैटर और लेटर में अंतर समझिए, वैसे ही जैसे एडवाइस और एडवाइस में अंतर समझिए। सो यहां, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, विल यू कम? I asked half-heartedly, half jokingly, and he says with a broad smile, yes, 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 I will come. A few days later, कुछ दिनों बाद, I see him running to me. एक दिन वो मुझे देख लिया और मेरे पास दौड़ते हुए आया और उसने पूछा, Is your school ready? देखिए बच्चे का उत्साह, मतलब बच्चे को वास्तव में स्कूल जाने की इच्छा थी। He wanted to go to school, but circumstances did not permit him to go to school. वो स्कूल जाना चाहता था, वो पढ़ना चाहता था, स्कूल न जाने का उसको अफसोस था, लेकिन नहीं जा पा रहा था बिकॉज उसको अपनी जीविका बनानी थी और उसके आसपास कोई स्कूल नहीं था। जो उसने कहा, आई हैव नो स्कूल नियर इन माई नेबरहुड। सो ही कम्स रनिंग टू द राइटर, टू द नरेटर एंड आस्क्स, इज योर स्कूल रेडी? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल डियर। स्कूल बनाने में लंबा समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल। सो दैट इज हाउ द नरेटर ट्राइज टू make Sahib understand that school building will take some time. It takes longer to build a school. Longer मतलब again time. ज़्यादा लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में, समय लगता है। That's what she said. It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise. Embarrassed मतलब संकोच होना। एम्बेरस, EMBARRASSED, एम्बेरस्ड, अफसोस हुआ। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस। प्रॉमिस माने वादा, प्रॉमिस यानी वादा। बच्चे ने दौड़ते हुए पूछा, दौड़ते हुए आया, ही केम रनिंग एंड आस्क्ड मी, हैव यू बिल्ड द स्कूल नाउ? इज द स्कूल रेडी? एंड आई से सॉरी इट टेक्स लॉन्गर। मैंने बहाना कर दिया, मैं स्कूल थोड़ी बना रही थी, लेकिन उत्साह में मैंने हाफ जोकिंगली आई हैड टोल्ड हिम दैट इफ आई बिल्ड ए स्कूल विल यू कम? एंड ही सेड यस आई विल कम, बट आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ बिल्डिंग ए स्कूल। मेरा स्कूल खोलने का भी विचार नहीं था। But the child comes running and he asks me, have you built? So just to avoid, मामले को टालने के लिए मैंने क्या कहा? I told him, well, it takes longer to build a school and I was embarrassed. और मुझे संकोच होने लगा क्योंकि मैंने उससे वादा किया था, हाफ जोकिंगली कहते हुए, that I was not meant, that was not meant. लेकिन वो वादा खोखला था, कोई इसका उद्देश्य नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, ऐसा वादा जिसका कोई अर्थ नहीं था। मीनिंग, मीन मतलब अर्थ होना, मीनिंग उससे बना मीन्ट, दैट वॉज नॉट मिंट। जो मैंने कहा था उसका कोई अर्थ नहीं था, वो तो ऐसे ही मैंने हाफ जोकिंगली उससे पूछ लिया था। आई हैड आस्क्ड हिम जस्ट हाफ जोकिंगली, बट द बॉय हैड टेकन इट सीरियसली. And that is why he comes to me running after a few days and asks me, have you built the school? I told him it takes longer. I was embarrassed. I felt very uneasy, uncomfortable, because I had made a very wrong promise to the child. But promises like mine abound in every corner of this world.
See the beautiful line, a very true line. But the promises like mine, mine माने मेरे जैसा. But the promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak माने अंधकार नुमा दुनिया में. Abound माने बहुत हैं. To abound माने बहुत. अच्छी संख्या में. Mine माने मेरे जैसा या मेरा. This book is mine. This house is mine. Promises like mine. मेरे जैसे promises, मेरे जैसे वादे. Translation is, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. Bleak माने अंधकार, भविष्य ना हो जिसमें. ऐसे जो promises हैं, जैसा मैंने किया था, ऐसे वादे तो साहेब नाम के लोगों की दुनिया में उनके हर तरफ ऐसे बहुत से खोखले वादे होते रहते हैं. कैसे? promises like mine, मेरे जैसे वादे. जैसा वादा मैंने किया. कैसा वाला वादा? कि स्कूल खोलोगे तो आओगे क्या? ये सब झूठे वादे. And the writer says, but promises like mine abound in every corner of the world. मेरे जैसे वादे, ऐसे झूठे वादे तो साहेब की दुनिया में बहुत हैं. यानी दुनिया में झूठे वादे बहुत होते हैं. झूठे वादे करके लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है. People play making false promises. This is what is the fact, and this is what the writer wants to say in this paragraph. Now we come to the next point, next stage of this story.